Good evening. Warm welcome behalf of the Diabetes Awareness and You Day. Today we are keep this session specially to celebrate the International Women's Day with all our beautiful T1Ds panelists. They are with us today, and we have taken out the different day. Usually the Sunday is we don't have any scheduled program, but as this is the International Women's Day, we don't want to miss this opportunity to celebrate. So as all of you know, that this is the very special Women's Day. That this theme is gift to gain, and this is the campaign emphasize the supporting women's through the mentorship, the education, the equal opportunities. So today we are going to discuss about the type 1 diabetes and the women. What are the unique challenges come and how they recover, not only the recover, how they deal with this. And it is very challenging. As type 1 diabetes is autoimmune, and especially when we are talking about the women's and sex difference, and this has been observed that the women's and the girls facing diabetes related complications and many times it's a poor outcomes in a different situations, like the hormonal imbalances is there, and during the periods and the menstrual cycle there are some elevation of the blood glucose levels, and the challenging about the type 1 diabetes during the pregnancy, in the social gathering. So there are different lots of challenges they face, and they deal with this. And myself, I am Kajul Hasda. I am the senior diabetes educator from Diabetes Awareness and You, and I am going to moderate in today's session. There is Ms. Shukana Shamanto, who is co-moderator with me, and she will be there to moderate this session also. So I don't want to miss the opportunity to introduce all the panelists to all of you. Let's start. So there is our junior most panelist, that Ms. Shukarna Sharkar, and she is living with successfully and brilliantly with type 1 diabetes, and she is the good dancer. She has said, no, I want to attend today's session because of this is very much special for me, and I want to share my experience. So we want to miss to hear from her, and welcome Shukana in today's program. Being the panelist, we welcome you in today's session. And there is Ms. Akanksha, and she is the founder of Type 1 Smile Foundation, and organizations committed to supporting and empowering children with type 1 diabetes. And she is also a diabetes educator. Being the diabetes educator herself, living with type 1 diabetes, and she truly understands the challenges and works which tirelessly to educate, counsel, and support the other fellow T1Ds and their family members. So we welcome you, Ms. Akamsa, in today's session, and welcome you on behalf of DAY. So thank you. Next, a very special, and I can call the senior panelist of today's session, Ms. Rekha, and she is from Bangalore, and she is living with type 1 diabetes since 1983, and she is the author of a beautiful book, The Fruit and the Needle, and actually she has written about the diabetes, the parents, caregivers, and whoever's in facing and challenging in life. And still now I have not read about your book, ma'am, but definitely I will love to read your book, because as you have submitted as the nominee for the best T1D star, and that time we have heard that you are the author of the T1D this book. So congratulations for being the author of that book, and we are very much thankful and grateful that you have joined in today's sessions. So thank you all the panelists to joining here. And now before going to start the session, I want to
request our founder secretary, Mr. Indrajit Majumdar, to say a few words and to encourage us, all the T1Ds, this Women's Day, as well as there is some surprise to uh, uh, like say for us. So I request him to encourage. Over to you. Thank you. Namaskar. Thank you, Kajal. First of all, I would like to uh, congratulate all the women on this International Women's Day, and especially our T1D channel, especially our panelists here today. Uh, Actually, T1D is itself a challenging, but in the case of women, they are a little bit extra challenge. And all are all the panelists today here are overcoming these challenges in day-to-day life, and 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 uh, and just spending their life fantastic. So, taking this opportunity, I would also like to declare that because since we have a T1D school, we are running this school for the last 5 years. There is a fortnightly session. We are thinking about to start a special initiative for the T1D mothers and would-be mothers. So on this occasion, I think this is the best occasion to start or declare the same initiative that we would like to start and separate initiative for the T1D mothers and would-be mothers. And I would like to request all the panelists here to say something about this during the course of today's event, because T1D mothers have to face a lot of things, extra challenges. And I see that today here the few mothers are there, T1D mothers are there who are already and would be mothers also there. So from day we are starting this special initiative on this International Women's Day. And another thing I'd like to share today for the especially for the type T1D friends of our India, that you know that we have initiated an idea and observed the 11th January as the International Type 1 Diabetes Awareness Day. And I am very glad to share today that Diabetes India today itself have endorsed the officially endorsed the thing and sent to the International Diabetes Federation for their recognition, so that we can observe the 11th January as the Type 1 International Type 1 Diabetes Awareness Day. So that is a fantastic coincidence today. Today is the 8th March, International Women's Day, and today itself the Diabetes India have officially endorsed and endorsement sent to the International Diabetes Federation for their recognition to establish 11th January as the International Type 1 Diabetes Awareness Day. So with this, I would again congratulate all the panelists today, and I definitely I am eager to learn from you, from your life experience, and your experience definitely encourage others to overcome the challenges in their life. Once again, congratulations on this International Women's Day. Thank you. Over to Kajal. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And all the audiences who are there who are watching us to managing the like the diabetes as well with the multiple diagnosis, if there is the PCOS or any other things is if there. So don't be afraid to ask for what you need. Questions your care plans and remember that you know about your body best. So please write down the questions in the chat box so that the panelist can give you the answer from their own journey experience. So please be with us today and write down the questions in the live chat box. And now I hand over to continue the further session, my co-moderator, Ms. Shukana. Over to you. Thank you, ma'am. So I firstly introduce Miss Sukarna Sarkar, another Sukarna. So she is living with type 1 diabetes since 2017 and she is a student of plus 7 at Kolkata. And she is also a passionate Odissi dancer. Sukarna, we welcome you on behalf of Day. And firstly, I would like to
request you to share your experience that this period, adolescence period, is very challenging for type 1 diabetes uh, due to hormonal, psychological, and social changes. So that can also cause the metabolic instability. So how you are managing, and as you are also a good dancer, so please share your experience. Okay. Hello everyone, good evening. I'm Sukanya. So, being a T1D, I really enjoy my life, and adolescent period is really challenging. And recently, I got my first period. So, and being a T1D, it's a little tough, but not that tough that you can't manage it or like. And like I do regular exercise such as dance. I love to dance, and it helps me. It helps me to overcome the stress and everything from the like the thing I'm getting, the pain and the cramps, or all the things, and dancing, and I also have, like, I really have supportive friends. They help me a lot, and they support me a lot over it. And like I would thank to my friends and dance, and it they helps me like a lot. And these are the things I would suggest that. Thank you. And that's the thing. Thank you. Thank you, Shukana, for sharing your valuable experience. Thank you. Uh, Next, I would like to request to Miss Rekha ma'am and Miss Akanksha and Ritika that how would did you ever face any obstacle or any social challenges regarding marriage because of living with type 1 diabetes? There are a lot of challenges in societies to getting married. And sorry, before move to the session, I firstly want to introduce Miss Ritika. She is also type 1 diabetes, living with type 1 diabetes, and next, Ms. Rekha Ramaya Orun, she is residing in Bangalore, and she was first diagnosed with type 1 diabetes in 1983, and she also authored a book, The Fluid and the Needle, as an inspiration for people living with type 1 diabetes. And another panelist, Miss Akanksha. She is the founder of Type 1 Smile Foundation, an organization committed to supporting and empowering children with Type 1 diabetes. Being a diabetes educator herself and living with Type 1 diabetes, she truly understands the challenges and works to educate and counsel the support and the families. So now I request to share their experience, Ms. Rekha ma'am, Ms. Akanksha and Ms. Ritika, uh, कि कैसे आप जैसे मैरिज का जो चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी में, कैसे आप फेस करते हैं. यू कैन शेयर इन इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम. प्लीज शेयर. Good evening, all. Hello. Yes, yes, please. Good evening, all, and happy Women's Day to all. जैसा कि मैम आपने क्वेश्चन किया कि एज टाइप 1 और मैरिज में सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर क्या क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे Yes, yes. कि मेरी शादी को भी 2 साल हो चुके हैं और मैं लास्ट 12 ईयर से टाइप 1 हूँ. तो जब शादी की बात आई तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सबका अलग अलग क्वेश्चन था. और तो
फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि टाइप 1 है तो शादी होगा तो सब चीज मैनेज कैसे करेगी, ऑफिस कैसे मैनेज करेगी, घर कैसे मैनेज करेगी, बच्चे कैसे मैनेज करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 है तो पता नहीं, हो सकता है कि इनकी लाइफ बहुत लंबी ना हो, कम हो। तो लोग सोचते हैं ना कि अगर मुझे अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है Miss तो मुझे Akanksha, sorry to interrupt. Can you please on your video? एक्चुअली माय नेटवर्क इज लिटिल बिट Okay, स्लो। okay, okay. या तो जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि सबको 100% परफेक्ट वाला जो टैग होता है ना वो चाहिए, चाहे कोई भी हो। और जब शादी की बात आती है तो लोग चाहते हैं ना, मुझे अपने में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नेक्स्ट डे मुझे 100% परफेक्ट वाइफ मिले या हस्बैंड मिले। तो बीइंग जैसे टाइप 1 है तो लोग, जो मेरे साथ में जो क्वेश्चंस आए कि क्योंकि मैं जॉब कर रही थी पहले से ही, तो जॉब कैसे करेगी, घर कैसे संभालेगी, अगर जॉब करेगी तो घर नहीं संभाल पाएगी, सारे काम नहीं हो पाएंगे, दिन भर तो ये इंजेक्शन ही लेंगी, दिन भर ये शुगर ही चेक करेंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट जो समझने वाले लोग हैं वो उस चीज को समझेंगे, और जो नहीं समझने वाले हैं उनको हम कितना भी एक्सप्लेन करेंगे वो उस चीज को नहीं समझेंगे। Yes. हमारे साइड में क्या क्वेश्चन आया कि क्या कि नहीं, हमें हम नहीं ऐसे बहुत सारे रिश्ते मिले, मैंने काउंट नहीं किया है, बहुत सारे होंगे जिन्होंने कि मना किया कि नहीं मुझे नहीं करना है। या जैसे कि जब रिश्ते जाने से पहले मैं पापा को बोलती थी कि फोटो बाद में भेजना, पहले उनको कंडीशन बता दो। तो जब कंडीशन बताते थे देन वो कहते थे नहीं नहीं, हम मतलब डायरेक्ट तो मना नहीं करते थे, बहुत सारे बहाने तो वो तो कोई भी समझ जाएगा कि वो आप मना ही करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट नो बोलो या फिर आप घुमा फिरा के कुछ बोलो। बट क्वेश्चंस ये आते थे कि काम कैसे करेगी, कुछ ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग भी रहते थे कि इंजेक्शन लेते हैं तो कैसे काम करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, फिर आप तो स्वीट्स नहीं खा सकोगे, आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकोगे, कहीं बाहर जाओगे तो आप फिर ट्रैवल कैसे करोगे। ये सारा ना एक क्वेश्चन का लिस्ट बन जाता है, इस हिसाब से कम 50-100 क्वेश्चंस के लिस्ट बन जाते हैं लोगों के माइंड में। बट मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप 1 लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, सब हैं, और सब उसको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, और सारे चीज को साथ में रखते हुए अच्छे से अपने लाइफ को जी रहे हैं लोग। अब जैसे मेरी शादी होगी, मैं अपना घर भी देखती हूँ, मायके भी देख रही हूँ, ससुराल भी देख रही हूँ, जॉब भी देख रही हूँ, और साथ में जो मेरे आसपास के जो टाइप 1 लोग हैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उन किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे एडुकेशन के हिसाब से, चाहे उनको इंसुलिन के हिसाब से, जो भी मेरे से पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सबको हेल्प मिले। और एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि कोई भी अगर किसी को कोई टाइप 1 लड़की का रिश्ता आ रहा है या टाइप 1 लड़के का भी रिश्ता आ रहा है, तो आप उनको इस चीज से जज मत करो कि वो कुछ नहीं कर सकते या फिर वो कुछ भी नहीं है। ऐसा ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि आप उसको एकदम जैसे बेकार पड़ा सामान हो गया जिसका कोई यूज नहीं है वैसे जज मत करो। लोग वैसे भी जज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज मेरे साथ हो रखी है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और आइडिया है। तो मैं सोसाइटी में ये मैसेज जाना चाहिए कि आप इस तरह से किसी को जज मत करो। सारे लोग अपना शुगर भी मैनेज करते हैं, ना जॉब भी मैनेज करते हैं, और सारी चीज को मैनेज करते हैं। Thank you, Akanksha. Thank you. Next, I want to move Miss Sharekha. Please share your experience. Good evening, everybody. I wish you all the women International Women's Day. Happy Women's Day. Okay, I'm not much fluent with Hindi, so I think I'll Okay. talk in English itself. Yes, yes. Yeah, and I think Akansha has told everything what the women faces. Yes. Yeah, since I'm little bit older, and in those days we didn't had all internets and all the social medias. We had a different type of problems. So they used to tell, like, there were many proposals. They used to tell that, like,
okay, don't tell the family members you're a type 1 diabetic. That was the proposal which I got at first. I don't know, it's okay. If you're not interested to tell to the family members, even we are not interested in getting, this is what my father told, not getting my daughter married. Because either today or tomorrow, they'll come to know. Rather than facing the problem tomorrow, it's better tell today and move ahead. It's okay. If my daughter doesn't get married, no problem. We are there to take care of her. But don't want to send to that house where she'll be like in some sort of problem either today or tomorrow. So like that, we each one have one or the other issues. But one thing I'll tell, since a diabetic from so many years, whatever is there, be truthful. One or the other day, it will come to either today or tomorrow. If you go into IPO, they'll come to know, right? Why is that she's gone into IPO? It's okay. There are many people who will accept us, and there'll be better people to accept us. So let us move ahead. It's not that diabetic is something that we can't lead our life. We can lead a better life than the normal people. We can do the job as Akanksha told. We can do everything. So it's just a myth. You can tell that diabetic women can't do this, can't do that. My colleagues and my friends, like she's a diabetic and she's in Sydney and she's got a son who's doing a doctor. So I have other friend who has got two daughters. So even she is doing in a much better way. And some people have that myth that, okay, mother has got a father has got a diabetic, even it can pass on to the children. It's nothing like that. We have type 1 diabetics where the children are just prospering in whatever field they have chosen. It is not genetic. Some people, let's in our ages, in the 90s and 80s, they used to tell it's like a heredity. It's not heredity. It's like whatever we are destined, we are just followed with all those things. So it's nothing like genetic or whatever they tell it. It's each one have their own life. Being a diabetic, it's just you can call it a boon or just a mercy, right? We can lead a much disciplined life than the others. So nothing to worry, just keep on moving. That's all I can tell. And I think Mr. Indrajit and Mr. I can't get your name. Shukarna. Sorry, Sukarna. I think they've And already another ma'am told was about Kajal ma'am. yeah, they have told about my book. Yes. Keeping in mind the people challenges, like what parents are thinking that, okay, now who are type 1s, now Just parents know the are having a truth. lot of Don't problems. believe in the misconception and Yeah, share everything to their family, to your that's true. partner that you have type 1 diabetes. It is manageable. It's Yeah, absolutely normal. You can do everything. yes, we can do much It's, better than the they normal can climb people. the Everest also. Is Yeah, even friends also. Some yes, students yes. they feel like, why should we tell, or we'll be like away from others. Please don't do that. Tell your friends because your friends will be in a better position to handle you when you go to into IPOs. So please don't ever hide anything. Okay, it's okay. They'll have good friends. You'll have make a good friends also. They'll be matured enough in handling things when you are open to Manage them. the type 1, we should know all the fact, not the misconception or myth. Yeah, it's not a this one. It's It okay. You can handle can be things. life threatening. Actually, when I was diagnosed, the doctors told my parents, like, as your daughter is diagnosed, don't know when she'll start affecting her. This diabetics affects her organs. Actually, till now, nothing has happened. So that is how they're scared. My parents were like very feeling very bad. What is this? Then when we met doctor, one of the good doctor, Dr. Arvind in Bangalore, he told you're going to survive till 80 years. So that was the first thing which gave a confidence in my parents. That is how the life changed. So keeping all my whatever the things ups and downs, I've written a book so that
Like people or We are patients eagerly or waiting to read the book. Check yeah, in the internet. Thank you, ma'am. yeah, yeah. Thank you, It's on ma'am, for sharing Amazon. your Yeah, inspirational story. Thank you. yeah, sure. And Thank now you. I would like to move to Miss Ritika. रितिका, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जिसका टाइप 1 डायबिटीज है, लड़कियों का शादी का एज हो गया है, तो वो कैसे, उसके फैमिली मेंबर कैसे देखे इसको, कैसे वो शादी के लिए कन्विंस कराए जो लड़के वालों का फैमिली एंड सोसाइटी को। অ্যাকচুয়ালি দেখো, কনভিন্স করানোর কিছু নেই। যেহেতু যাদের ডায়াবেটিস আছে, সেটা আগে সবার আগে তাদেরকে বলা যে হ্যাঁ। আর অ্যাকচুয়ালি এখন সবাই ডায়াবেটিস সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান প্রত্যেকেরই আছে, যে কেউ জানে না এমনটা নয়। এবার যারা একটু জানে না তাদেরকে বলা, তার থেকেও বড় কথা সবার আগে আমার ডায়াবেটিস আছে সেটাকে জানানো। দেন তাদের যদি কোনো অবজেকশন না থাকে সেক্ষেত্রে এগোনো, না হলে ওখানে স্টপ করে দেওয়া। কারণ ডায়াবেটিস আছে বলে যে আমার বিয়ে হবে না বা এরকমটা কিছু নয়। যেহেতু আগে যখন প্রথম যখন আমার ডায়াবেটিস হয়, হ্যাঁ, তখন আমার বাড়ির লোক প্রত্যেকে আগে ভেঙে পড়লো যে পড়াশোনা হয়তো আমার হবে না, হ্যাঁ, স্কুল যেতে পারবো না, এমন একটা রোগ হয়ে গেছে, বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে, আমার হয়তো কখনো বিয়ে হবে না, হ্যাঁ, কখনো আমি সবার সঙ্গে সবাই যে কোনো মিটিং কোথাও কোনো গেট টুগেদার আমি কোথাও যেতে পারবো না, সবসময় আমাকে আলাদা খাবার খেতে হবে, আলাদা একটা ব্যাপার ছিল। তো সবাই প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তো তারপর যখন থেকে সবাই মানে ডক্টর দেখালাম, ডক্টর যখন বললো যে না, ওরকম কোনো ব্যাপার নয়, আলাদা কিছু নয়, সবাই সেম, ও সমস্ত কিছু খেতে পারবে সেটাকে কন্ট্রোলে। আর বাকি যারা নর্মাল যারা আছে তাদের নিজস্ব কোনো চার্ট নেই, তারা সমস্ত কিছু খেয়ে নেয়, আনলিমিটেড খেয়ে নেয়, সেক্ষেত্রে সেটা আমাদের একটু রেস্ট্রিক্টেড, যে আমাদের একটা লিমিটে খেতে হবে, আর তার জন্য এত পরিমাণ ইনসুলিন নিতে হবে, তাহলে আমরা আরো ফিট থাকবো। আমার মনে হয় আমরা নর্মাল মানুষদের থেকে আমরা অনেকটা ফিট, হ্যাঁ, আর তাদের থেকে আমরা সবকিছু বেশি করতে পারি। এই কারণে আমি আমার থেকে বলতে চাই যে আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন আমার যখন ডায়াবেটিসটা ধরা পড়ে, স্কুল থেকে বলে দিয়েছিল যে স্কুলে আসার দরকার নেই, তাহলে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে, যখন পরীক্ষা হবে তখন এসে এক্সাম দিয়ে যেতে। তো সেটাতে আমি কখনো রাজি হইনি, আমি কন্টিনিউ রেগুলার স্কুল করেছি, তাদেরকে বুঝিয়েছি, হ্যাঁ, আমাদের ডে থেকে সবাই গিয়েছিল, দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়েছিল যে এরকম কোনো ব্যাপার নয়, সে পড়াশোনা করতে পারবে, সবই করতে পারবে, ও নিজেরটা নিজে জানে যে হ্যাঁ কিভাবে আমাকে থাকতে হবে। তো তাদেরকে বোঝালো, দেন স্কুল পাস করেছি, কলেজ পাস করেছি, হ্যাঁ, এখন আমার বিয়েও হয়ে গেছে, আমার একটা ছোট বাচ্চাও আছে। আমি সেই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে পরে আসছি, ঋতিকা, সেই এক্সপিরিয়েন্স তোমার কাছে আমি শুনবো আমরা, তোমার প্রেগনেন্সি পিরিয়ড এবং তোমার বাচ্চার গল্প আমরা শুনবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ঋতিকা, সাথে থাকো। Next, I want to ask Miss Akanksha that how does your menstrual cycle affect your blood glucose level and how do you manage it? Akanksha, hello. हेलो। Yes, yes. How you manage your menstrual cycle? That we know that the menstrual cycle affect our blood glucose level, and how do you manage it? जैसे कि पीरियड्स के टाइम में जितने भी टाइप 1 हम लोग हैं, सबसे पहली चीज है कि हमें एसएमबीजी पे ध्यान देना है। शुगर हमेशा मॉनिटर करते रहना है। जब भी कभी तबीयत खराब हो या फिर पीरियड्स हो, तो शुगर कभी कभी हाई हो जाते हैं, तो हम अगर पहले इसको चेक करेंगे, अगर शुगर्स हाई जा रहे हैं तो हम वहाँ पे करेक्शन डोज लेते हैं, और अगर नॉर्मल है तो जो भी हमारे इंसुलिन का डोज है उसको लेते हैं। और खास करके पीरियड्स के टाइम में पानी ज्यादा पीना है, ताकि हाइड्रेशन पे भी ध्यान रहे। और मॉनिटर सबसे मेन चीज है, शुगर मॉनिटर करते रहना है और हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। और अगर हाई जा रहे हैं तो फिर हम करेक्शन डोज लेंगे। इस इतना सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you, thank you. So know the fact and manage everything. Uh, Again, I like to move to Miss Rekha. That
As women move to menopause, hormonal changes can again affect blood glucose level and overall health. So, from your perspective, what are the key challenges and how can women prepare for this stage? Uh, I think it's like just like other women only. Only thing is you have to just keep in and sugars under normal, like others told. Whenever it is high, just give the correction dose and see what the doctors tell. It's not that like you have to get worried. Yeah, it may take, for example, if you have fever, like normal person may get cured within 3 or 4 days. For diabetics, it may take other 1 or 2 days extra. So it's like normal thing. You have to just don't get scared because diabetic, what will happen? Because that fear only leads to other things, increase in your sugars. And if your sugars are more, it leads to other curing of your illness takes time. So just listen to whatever doctor tells and follow whatever the prescription they do and just correction doses, whatever it is. And don't try to get scared for anything because of so many years, I've just seen we are leading a better life than the normal people, women. So just take it as some challenge and just move on. Nothing to worry. Thank you, ma'am. Thank you. So I like to move to Ritika again. रितिका हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ प्रेगनेंसी से पहले अच्छी तरह से प्लानिंग करना पड़ता है सो आपका क्या सजेशन है एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी एंड क्या सजेशन देना चाहते हैं सोसाइटी को कि जो लोग प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं विथ टाइप 1 लिविंग विथ टाइप 1 डायबिटीज तो कैसे मतलब कौन कौन सी चीज में उन लोगों को ध्यान देना चाहिए হ্যাঁ, সবার সবার আগে প্ল্যানিংটা সবার আগে জরুরি ডক্টর দেখানো আর একটা গাইনোকোলজিস্ট সাথে ডায়াবেটোলজিস্ট দুজনকেই দেখানো দেখিয়ে দেন তাদের পরামর্শটা সবার আগে মেনটেন করতে হবে যেহেতু আমাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে তো আমরা চাইবো না আমাদের পরবর্তী জেনারেশন বা আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে যেন এটা নতুন করে না হয় তো সেই দিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাকে কেন প্রত্যেককে তো সেই দিকটা মাথায় রেখে আমরা ডক্টর দেখিয়েছিলাম ডক্টর যেভাবে বলেছিল নিজেদের সারাদিন মানে সারাদিনে এসএমবিজি অনেকবার মানে 7 থেকে 8 বার আমরা খেয়াল রাখতাম প্রত্যেকটা মুহূর্তে যদি একটু এদিক ওদিক লাগতো বা আজকে শরীরটা খারাপ লাগছে বা কিছু লাগছে সেক্ষেত্রে সবসময় সবার আগে সুগারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে সুগারটাকে আগে খেয়াল রাখতে হবে তার সাথে যেমন খাওয়া দাওয়া ডক্টর বলেছিল যে আমাদের একটু এক্সট্রা খাওয়া দাওয়া দিকে ধ্যান রাখতে যাতে সবকিছু নর্মাল থাকে এমনটা নয় যে আমরা আলাদা কিছু তো আমার ক্ষেত্রে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি সবসময় যেটা আমি ফিল করেছি যে যখন আমার প্রথম প্রেগনেন্সি এটা আমার তো আমার এটা কাছে প্রচুর মানে প্রচুর চ্যালেঞ্জিং ছিল যে আমার যেহেতু টাইপ 1 ডায়াবেটিস আমার মায়ের টাইপ 2 ডায়াবেটিস ছিল সেক্ষেত্রে একটা জেনারেশন আগে ছিল তো যাতে আর নতুন করে না হয় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে গিয়ে ডক্টর দেখানো ডক্টর যেভাবে বলেছিল নিজেকে মেনটেন করে রাখতে ঠিক সেইভাবে রেখেছিলাম হ্যাঁ দেন ওই রকমই আর কি আর আলাদা কোনো কিছু নয় আলাদা কোনো কেয়ার বা আলাদা কোনো কিছু নয় হ্যাঁ জার্নি করতে বারণ করেছিল বা কিছু এরকম কিছু নয় আমি সবকিছুই করেছি একদম বাস ট্রেন ট্রাম কোনো কিছু বাদ রাখিনি সব করেছি নর্মাল এক্সারসাইজ যেমন আমি মানে ভারী জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করে বাকি নর্মাল এক্সারসাইজ যেমন করতে বলেছিল হাঁটা চলা সমস্ত ঘরের কাজ সবকিছুই সামলেছি অফিস করেছি লাস্ট অফিস টফিস সবই করেছি কোনো অসুবিধা কিছু হয়নি আর সবকিছু ভালোভাবে পেরিয়েছি সবার ইয়েতে অসুবিধা আমার কিছু হয়নি থ্যাংক ইউ তো কি তুমি সাজেশন দিতে চাইবে সোসাইটিকে যে কিভাবে মেনটেন করবে অ্যাকচুয়ালি মেনটেন করবে যে নিজের মানে শরীরটাকে আগে দেখে যে আমি কতটা কি করতে পারছি তার উপরে কোনো কিছু জোর দিয়ে নয় আর তার আগে সবার আগে ঠিকঠাক করে ডক্টর দেখাতে হবে গাইনোকোলজিস্ট সাথে ডায়াবেটোলজিস্ট খুব ভালো করে দেখিয়ে সমস্ত রকম টেস্ট আগে সবার আগে করে যে আমার সুগারটাকে আগে সবার আগে কন্ট্রোলে রেখে তারপর এগোনো সেই দিকটা মাথায় রেখে
সবার আগে সুগারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে, নিজের খাওয়া দাওয়াটা, তাহলে আর কোনো সমস্যার কিছু নেই। Thank you, Ritika. Thank you. She told that we have to maintain our diet properly and proper insulin doses, and always follow what your physician suggestions, and check SMBG level also. She minutely check her blood glucose level every time, and keep it normal as per our guidelines. So that was her suggestion that don't worry, please check your blood glucose level and keep maintaining your healthy lifestyle with diet and diet, exercise, and whatever you are doing. You, if you are attached with any job or any work, please do that, and don't do any hard work at the time. So it will help us. Thank you, Ritika. Thank you for sharing your inspirational journey. Thank you. তোমার বাচ্চার এখন বয়স কত? 1.5 বছর, 18 Okay. months। So, okay. ছেলে না? না, মেয়ে। মেয়ে। Okay. So she has a girl child, and her age is only 1.5 years old. She is. So say her happy Women's Day. She's cutest member, tiniest member. Thank you, Ritika. Thank you. So, thank you to all our wonderful panelists. Thank you for your sharing inspirational journeys of living with type 1 diabetes on the special occasion of International Women's Day, and keeping in mind the theme that give to gain. So let us continue to support, share, and empower each other. Thank you everyone for joining with us today. Please stay safe and keep blood glucose level normal and live a normal life. Thank you. Thank you all. And once again, happy International Women's Day to all our audiences and all our beautiful panelists. Thank you.